Hello everyone, welcome back to ETimes. This is Sheena and today I have the cast of Masoom with me right here. Hello everyone. Hi. It's a pleasure to have you in ETimes today, and as I was telling Boman sir before the interview that I have watched the trailer 5 times, and each time I watch this trailer there is something that remains stuck in my head. And the last time I watched it with you before this interview, the last part of it, towards the ending of it, when you look back and you smile, that is something that's now stuck with me. Why is that? So I don't know. There's something. I remember the first time I watched it was Samara's, because the camera is starting from your eyes, your expressions, eye expressions, and goes back. Yes. And then of course, ma'am, when you're on the floor and there's something that's hit your head, and that was something. And then of course the funeral scene, that also Right. is a very emotional scene. And of course sir in that turban, in that look. So please tell me, what is it and how is it that every time I'm watching it's just getting stuck to my head? I think that's fab. Because I think that it's great that you're being able to see newer things, which is good because you're noticing a lot of things and those are tiny things. Yeah. And when someone notices that, it actually feels like we've done a good job. I agree. उपासना जी आप क्या कहना चाहेंगी? इनका- ट्रेलर देखते रहती है. इनका 5 बार देखना ही बता रहा है कि हमारा शो हिट है. ट्रेलर को ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं एक दिन के अंदर. तो आई एम श्योर कि जो भी लोग हैं वो भी नुआंसेस को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप का शो है जो बना है. तो प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट इट. या लॉन्ग शॉट पे कट करना. No, you're right. It is a show with suspense and thrill, but it is essentially a show about these wonderful people here who it is a family and उनके relationships और उस relationships की complexity से जो suspense और thrill है वो show को बांध के रखता है. I think वो ही show की uniqueness है कि externally शायद violent नहीं है ये show, but internally सब लोग काफ़ी अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड विच जो जिसने इनके बीच में तनाव पैदा किया हुआ है एंड दैट इज़ व्हाट द शो डील्स विद एंड इट्स वेरी इंगेजिंग, इट्स वेरी इंग्रॉसिंग. आप एंटर करते हो सस्पेंस और थ्रिल के साथ, बट जो आपको पसंद आ जाएंगे, जो रह जाएंगे लोग, जैसे आप कह रहे थे कि ट्रेलर देखने के बाद जो जो चीज़ें आपको याद रह रही हैं वो है, जैसे बमन का वो लुक है या समारा है या मैम है. So we are also hoping that once you start watching the show, you start associating with the characters and falling in love with them. And sir, coming to you, this is your OTT debut, so to say. But I know actor is an actor, Correct. and medium and all of this doesn't matter. Right. And for such an experienced actor like you, I understand that. But still, somewhere, like, how do you feel about it? It's on Disney plus Hotstar, and it's your OTT debut, and the OTT audience is, kind of different from the, so to say, regular movies kind of audience, because a lot of young people reach out to OTT platforms. I'm young too. For sure. And I am 22. No doubt about that. But I think you answered my question. I think eventually it's a character and you're looking for a character. But yeah, OTT, I'm really thrilled I'm doing this. Simply because the only good thing I did in the show, the one good thing I did in the show was pick the show. And when Guru called up and said, will you do this show? I read a couple of pages. I said, isme kuch hai. So I think that's a good thing. I did myself a favor. By accepting the show. And it doesn't matter, OTT, film, all of that doesn't matter. However, I think it's a privilege to get a role like this on any platform. And you have to work that much harder. You've got so much more soul searching to do, because it gives you an opportunity to layer your character, because the character is spread over 6 episodes. Yeah, absolutely. And Upasana ma'am, they always say कि कभी क्या हो जाता है, एक एक्टर को बॉक्स्ड कर दिया जाता है, एक ही नज़रिए से देखा जाता है that okay, when you're doing this, people are loving you in this character. When you say boxed, what do you mean? In terms of just one kind of She will box thing. anybody who says that. I'm not joking.
Okay, let me put it this way, that when you Well, I'm do joking, a certain kind of role, people love you in that, so people want to see you do that again and again. And you know, how was this creatively, you know, exhilarating for you in terms of doing this character? किसी भी एक्टर के लिए डिफरेंट रोल्स करना बहुत ही खुशकिस्मती होती है, और डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए ये कहा जाता है ना कि वो टाइप कास्ट कर देते हैं कि एक कोई चीज़ हिट हो जाती है अगर आपकी, तो लोग आपको बार बार उन्हीं कैरेक्टर्स, सेम उसी तरह के रोल्स, उसी तरह के गेटअप्स वैसे ही देना चाहते हैं. तो कुछ टाइम से, कुछ साल से लगातार मेरे पास वही कॉमेडी आ रही थी, और मुझे कॉमेडी करना पसंद है, लेकिन मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ, और एक थिएटर आर्टिस्ट हमेशा चाहता है कि उसे अलग अलग तरह के रोल्स मिले. तो मैं हमेशा से चाहती थी, और मुझे कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था कि मैं उसी तरह के लाउड कैरेक्टर्स कर रही हूँ. मैंने प्रूव कर दिया कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरे को कुछ ऐसे चाहिए जिसमें डेप्थ हो, जो एक डिफरेंट तरह का रोल हो. और जैसे कि हमारे शो में भी है मासूम में, कि इंसान की जो सच्चाई है वो इतनी सीधी नहीं होती. Absolutely. तो ये जो मैं रोल कर रही हूँ, ये इसमें बहुत लेयर्स हैं. इसमें हर कैरेक्टर की, हाँ. मतलब बमन जी की, समारा की, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा नहीं है पहले जैसे फिल्में हुआ करती थी ना, कि ये एक अच्छा इंसान है, हाँ. ये वैम्प है, ये हीरो जो है तो कभी गलत नहीं कर सकता है, हीरो कभी गलत नहीं हो सकता है, वो अच्छा ही करेगा, वैम्प कभी अच्छी नहीं हो सकती. और ऐसा, तो ये जो है ना, यहाँ पे जो अभी रियलिटी, जो वेब सीरीज़ के कारण जो रियल इंसान है, कि एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें मिलके एक इंसान की पर्सनैलिटी और वो होता है. तो वो लेयर्स हैं इनके कैरेक्टर्स में, मासूम में, हर कैरेक्टर में, और वो इतना इंटरेस्टिंग है. और वो जब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस तरह के रोल्स अब ऑफ़र, मतलब मुझे लगता है कि अब मैं इस तरह के भी रोल्स करूँगी, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अलग तरह के रोल करूँ. तो अब मैं इससे शायद अपने जो यंगस्टर्स आए हैं, नए नए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए हैं, उनको मैं शायद ये दिखा सकूँ कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसमें भी कास्ट करो. सो मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल करते हुए, और इतने अच्छे एक्टर्स तो हैं ही, आपको पता ही है, अच्छे एक्टर्स हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं ये लोग. मतलब हम एक फैमिली की तरह थे जब हम काम कर रहे थे. एब्सोल्युटली. बट जैसे कि मैम ने कहा कि यू नो एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी लेयर्ड, और ज़रूरी नहीं है जो वैम्प है वो वैम्प ही है, और जो यू नो मेन हीरो है वो हीरो है. सो अब देख के पता चलेगा कि रियल में मासूम कौन था, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब शो ही वही है कि सभी मासूम है और कोई भी मासूम नहीं है. Okay. तो और आप कहानी मत बताइए. मैं एक बात बताऊं, ये हमें कहते कहानी मत बताइए. कहानी बता, खुद बताने जा रहे थे, उसको रोक लिया. तो एक्साइट, हमें रोकना पड़ता है शो रनर को. लेकिन मैंने सुना अपने प्रमोशन टीम, पीआर टीम, सब लोग देख बेट्स ले रहे, दे टेकिंग बेट्स. असलियत कौन मासूम है कौन नहीं. तभी मैंने बोला ना कि देखना पड़ेगा अब तो ज़रूर जानने के लिए कि कौन मासूम है. सबसे मासूम मैं हूँ. स्टोरी बता दी ना आपने. इसमें भी सस्पेंस है. इसमें भी सस्पेंस है. But Samara, coming to you, you know, working with such experienced actors, what is it that you have learnt, you know, from them? So much. I can't put it in the span of the time that we have, but I will try. I learned a lot. I mean, I grew as a person, as a performer on this show. I also learned what it takes to be a lead in a show, how much it takes out of you. And I remember how exhausting it was also for me when it came to all the emotional scenes and stuff, and I used to just be like, हाँ करना था ना, तुम्हें character करो और करो because it was tiring. But I remember on my first day that I was there, I had to cry, and I had sort of like a technique of mine where I would listen to music, get into the space, get sad and cry. And I remember I was there on set my first day, and Boman sir was there, and he was chatting with me, and he was cracking jokes left, right and center. And I was just stressed because I was like,
he's gonna keep talking to me. Yeah. I have to stay sad. And Okay. I'm not going to be able to do that. I don't know how to do that because I was so set in my way of, working or doing my own thing. So I remember I just, before they were calling action, I said, give me 2 minutes. And I went somewhere in the corner, sat on the floor with my headphones and got really upset and came back. And Boman sir was chilling. He was chilling and he was standing next to me. And there's a scene you'll see, which you've seen in the trailer, where I asked him, ki, Mummy kaisi giri? That was the scene. And there was a point in that scene when they called action. 2 seconds later, there was a tear that fell out from his eye, and he was very happy before that, And I'm so happy the camera did not catch it because I just looked at him like this. I was just like, how have you done this? I want to know. And he said something to me. He said that you just have to be honest. And a lot of people had said that to me when I was training and stuff like that. But I said, yeah, okay, fine. But you practically saw it. But I saw it in Yeah. action, and I had like a sort of moment in my brain, and I was like, this This is the what I moment. have to get Yeah. to. This, and I think after that, I just learned that is the way. And I honestly, after 1 week of working and playing Sana, I didn't use my headphones anymore. And with ma'am, I think she was just so warm and so, so loving. I felt like there's a scene which is in the trailer where I'm hugging her. And I'm not a very physically affectionate person, but I felt like I wanted to cuddle her. And I think that really, really, like that helped me with my performance because she was so welcoming, she was so warm, and just the sweetest mom to have. Thank you. I love you. That's very sweet. But on an ending note, I want to ask sir and ma'am, both of you, this question that, when you do characters, does that stay with you for some days, some moments, or it doesn't stay with you at all and you just come out of it, snap out of it? How does that work? Because abhi itne saalon se you've been playing so many different characters, and please tell me about that. You want to go first? मैं बोलूं? आप बोल दोगे तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा क्योंकि सब कुछ यही बोल देते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं कि दूसरा आदमी जीरो हो जाता है. नहीं, लेकिन आप बोलिए. मैंने थिएटर में सीखा था. पहले तो हम कैरेक्टर में you got to be in the character and sleep with the character, yes. लेकिन थिएटर में क्या होता है कि when you play the character and the audience is responding and there's applause and this, I say this humbly, the standing ovation. जब backstage जाते हैं, green room में जाते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. Standing ovation. तो यही character में रहो, ऐसे लगता है high, we are on a high. छोड़ो मत अभी, इसको पकड़ के रखो. Because मैं जब ये करता हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है. तो मैं ऐसे ही बात करता था, ऐसे ही घूमता था और अपने आप को सोचता था मैं यही इंसान हूँ. To an extent, it is very important. तो मैं मेरे co-actor के पास गया, सुधीर जोशी, great Marathi theatre actor. And he said, see, you will have to come out of it. क्योंकि बाहर जाओगे, और सचमुच में हुआ, यहाँ पे standing ovation मिल रही है. बाहर गया, मेरे स्कूटर के पास वो पावती के साथ बैठा था. कौन बोला इधर लगाने को स्कूटर? अच्छा, तुम स्टैंडिंग ओवेशन में नहीं था, तुम्हें देखा नहीं, मैं अंदर लोग तालियां बजा रहे थे. 150 रुपया, okay. And you have to switch off after a time. You have to. So it says take some, ये Pond's का cold cream है, Pond's नहीं बोल सकते, cold cream, cold cream है, ऐसे लगाओ, 1 2 3 4 5 6 टीका लगाओ, ऐसे ऐसे करो, you're Boman now. I think it's very important to get back to reality. वो high में रहने में पूरा अपना life उल्टा हो जाता है. You love that high. Come back to the person you are and find truth as the human being you are. That's my little take on it. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई ऐसा कैरेक्टर करती हूँ तो मैं उस डेप्थ तक जाती हूँ तो फिर मेरे को निकलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा टाइम. जैसे कि मैंने इसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है मासूम में, तो वो व्हील चेयर पे है. तो मुझे ये फील करना था कि मेरे जो हाथ पैर काम नहीं करते हैं. तो जब वो कैमरा ऑफ हो जाता था, मतलब वो शॉट हो जाता था, उसके बाद भी मुझे टाइम लगता था ये सोचने में कि मेरे हाथ पैर काम करते हैं और वो हिलते ही नहीं थे. तो ऐसा मेरे साथ
कई बार हुआ है, मैंने रीजनल फिल्मों में भी काम किया है। तो मैंने एक फिल्म की थी मदर इंडिया, वो मैं मदर इंडिया का रोल मैंने भोजपुरी में प्ले किया था। तो उसमें जब मैंने वो मदर का रोल किया तो मैं इतने कुछ टाइम में इतने डिप्रेशन में आ गई, मतलब वो चलना वैसे हर टाइम दुखी और सब। तो वो जो 8-10 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत लाइफ में दुखी हूँ, मैं वैसे ही झुक के चलने लग गई और सब। फिर जब मैं मुंबई आई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उपासना सिंह हूँ, मुझे उपासना सिंह बनना है और ऐसा। तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन ठीक हुआ। लेकिन बमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो ऑन ऑफ होना चाहिए, असल में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो उसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे एज ए एक्टर मुझे टाइम लगता है। मुझे उस टाइम ऐसा ही फील होने लगता है कि मैं बहुत जैसे मैंने कभी भी जिस कैरेक्टर को हम ज़्यादा फील नहीं करते ना, उसमें हम ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं 5th टेक भी दे रही थी या कोई रीटेक भी होता था तो मेरे को ग्लिसरीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप टप 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 आइज में, क्योंकि वो उस हद तक मेरे अंदर घुस गया था। आप जी रहे थे, मैं जी रही थी उस कैरेक्टर को। तो वो कहीं ना कहीं फीड ऑफ ईच अदर। मैं उनकी आंखों में देख के आई यूज्ड टू फील पेन, हर पेन, आई फील बैड। आई डोंट नो, मैं आप मेरी आंखों में देख के आपको आई डोंट नो, लेकिन नहीं सच में हाँ, you feel sad and you feel sorry for the character। ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। हाँ, ज़्यादा बता नहीं सकते, ये बोलते मत बता। खुद बोल। And what about you, Samara? Like, how was this experience for you? Like snapping out of the character, or? It wasn't easy to just snap in and out of it because I think I'm also still learning. I think so. It'll take me a lot of practice to be able to do that. But also I mean, what I want to do and what I strive to do is to make the character as real as possible so that someone watching can empathize with the person, can sympathize with the person. So that's very important to me because you need to feel what I'm feeling when I'm on the screen for you as an audience. So I did dig very deep to a lot of places within myself to portray Sana, to play her as that person. So I had moments where, you know, I would have like a genuine complete breakdown, and then I would need 2 minutes to step out and finish my crying on my own and then come back. So it did take me some time, but I also learned how to, we used to play games in between takes, and I just want to say one. that was the best. He's talking about crying, I am talking about ऐसे नहीं है पूरे नहीं मैं हंसती भी हूँ. अरे भाई बहुत ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, इमोशन भी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, लेकिन मैं क्राई ऐसे नहीं है भाई. ऑडियंस मेंबर्स प्लीज Yeah, बहुत थ्रिलिंग है. There's lots of thrill. No, it was, I mean, it's difficult. Certain emotions were difficult to portray and difficult to snap out of, but I think we used to play word games in between, and I started understanding. She cried in the word games because she never won one round also. इसके लिए बहुत रोती थी कि मुझे हराया उसने. याद है आपको? So yeah, I think that was great because that was sort of like a switch on and off for me, and it was refreshing to have that because the character as Sana is pretty dark. And of course you had your headphones, so. Yeah, I have my headphones. She stopped using the headphones after. After like 1 week. I think 2-3 days you stopped using. I stopped using it very fast. In fact, once she was sitting down, I think this headphones, I looked at her, she understood, she removed the headphones. You remove the headphones, put it away. Because you're with the headphones, you're not found that moment there, you find the moment in the scene. Yeah. And that started to happen for me. So I was really happy. Well, thank you so much for being on ETimes, and I can't wait to watch the series and to find out who's the real Masoom and who's not. Yeah, अच्छा है, who's the real Masoom? कौन Masoom है? अच्छा take है आपका. Thank you. Hi, my name is Boman Irani, and you've just watched an interview on ETimes with the wonderful Sheena. Keep watching, and do watch Masoom on the 17th on Disney plus Hotstar. Thank you so much. Amazing, amazing.